RSS প্ৰধান ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত আহি মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰত উপস্থিত হৈছেহি। মই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা। আৰু ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সত্ৰখনলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। আৰু সত্ৰৰ যিসকল বৈষ্ণৱ আছিলে, সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত বাট চোৱাত আদৰণি জনাইছে। আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে কেমেৰাচন পুলকে দেখুৱাইছে মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰত আহি উপস্থিত হৈছেহি। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मा समाधिना ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ ब्रह्मा। মাজুলীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰত ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত আহি উপস্থিত হৈছেহি। তৃতীয় দিনৰ প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী পোনে পোনে সত্ৰৰ নামঘৰলৈ যাব ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। আৰু গায়ন বায়নেৰে বাটচৰাত আদৰণি জনোৱাৰ পাছত সত্ৰৰ ভিতৰলৈ ভকত বৈষ্ণৱসকলে আদৰণি জনাইছে। সত্ৰাধিকাৰৰ চৰালৈ যাব। আউনীআটী সত্ৰত তেওঁ সত্ৰৰ শিশু বৈষ্ণৱসকলে পৰিৱেশন কৰা মাটিৰ আখৰা প্ৰত্যক্ষ কৰিব। মাটিৰ আখৰা দৰ্শন কৰি আউনীআটী সত্ৰৰ আতিথ্য ল'ব ডাক্তৰ মোহন ভাগৱতে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সত্ৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। মাজুলীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে এয়া ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰখনত RSS প্ৰধানগৰাকীয়ে সেৱা ল'বলৈ এই মুহূৰ্তত সোমাইছে। আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে মাজুলীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা। এয়া মাজুলীৰ আউনীআটী সত্ৰৰ নামঘৰৰ ভিতৰত ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত সত্ৰৰ পৰম্পৰা, সত্ৰৰ নিয়ম পালন কৰি ধুতি কুৰ্তা পৰিধান কৰা ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত এই মুহূৰ্তত সত্ৰৰ মণিকূটৰ দিশে ৰাওনা হৈছে। সত্ৰৰ মণিকূটৰ ভিতৰত আউনীআটী সত্ৰৰ মণিকূটৰ ভিতৰত এই মুহূৰ্তত সেৱা ল'বলৈ সোমাইছে ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। আৰু মাজুলীৰ এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ সত্ৰখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সত্ৰাধিকাৰৰ চৰালৈ এই মুহূৰ্তত ৰাওনা হৈছে ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত সত্ৰত মণিকূটত সেৱা লৈ। ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ চৰাত এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছেহি ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। আৰু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাইছোঁ মাজুলীৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ আউনীআটী সত্ৰৰ পৰা। এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে আউনীআটী সত্ৰত সত্ৰাধিকাৰৰ চৰাত ডাক্তৰ মোহন ভাগৱত। সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰে আদৰণি জনাইছে তেখেতক।
सुनने के लिए आया हूँ। तुरंत आपने कहा तो बोलता हूँ। ऐसा है अपने यहाँ पर कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, जैसा पश्चिम में है। शिक्षा अलग, व्यायाम अलग, प्रार्थना अलग। हमारे ऐसा नहीं। हमारे अध्यात्म में मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ दोनों। तो इन एवरी स्पिरिचुअलिस्टिक परसूट देयर इज वेलनेस, हेल्थ का है, नॉलेज वो भी है, सस्टेनेंस, सर्वाइवल इसकी भी कला है। जैसे भी आपने माटिया कला जो दिखाया, तो मैं पहले से मैं संघ का शारीरिक प्रमुख रहा हूँ। सबसे मैं बोलता हूँ कि नृत्य, योग और निशस्त्र युद्ध, इन तीन में केवल स्पीड और वेटेज का फर्क है। एक्शन वही, जैसे अभी यहाँ दिखाया। तो ये हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ लाइफ और इंटीग्रेटेड स्टाइल ऑफ लिविंग ये चलती रही। बीच में विदेशियों के आने से हमारे संस्कार भ्रष्ट हो गए और 80% ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल एज वेल एज नेशनल एंड इवन यूनिवर्सल, वो ये जो फ्रेगमेंटेड स्टाइल है उसके कारण है। हमारे यहाँ उसका सोल्यूशन हम भूल गए थे और ऐसे हमारे सत्र जैसे संस्थाओं ने उसको अभी तक प्रिजर्व करके रखा। तो कहते हैं कि जल प्रलय जब हुआ तो वो मत्स्य आया और नौका में मनु राजा ने सारे बीज सृष्टि के। वैसे ये जो संस्कार इधर उधर हो गए, ट्रेडिशन विस्मृत हो गई, उस प्रलय में ऐसे इंस्टीट्यूशंस ने ये सब बीज सुरक्षित रखे हैं जिससे आने वाले भारत की सृष्टि होने वाली है। और इसलिए ये जो बात है, लोगों का मनोरंजन होता होगा, पता नहीं, मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन ये केवल मनोरंजन नहीं है, इट हैज गॉट डीपर मीनिंग भी है एंड डीपर पर्पस भी है। उसका हम सब लोग ध्यान रखें, आपको तो पता है, लेकिन बाकी हम सब लोगों के लिए इसको ध्यान में रखकर इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो इसलिए मैं राजनीति में जो लोग हैं उनको भी कहते रहता हूँ कि ये प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन नहीं है, एक्चुअली दिस इज प्रिजर्वेशन ऑफ फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। इसको इतना गंभीरता से उन्होंने लेना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप सब इसको कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उपकार है मनुष्यता, या कहिए कि मनुष्यता के लिए करने की आपकी तपस्या है, उसका हम सब लोग सम्मान करते हैं। तो हम लोग भी जितने इसमें सहायक हो सकते हैं उतने। थैंक यू। आर्टिस्ट